A scalar quantity requires its magnitude to be given to convey its parameter. Okay, what do you mean by magnitude? Sir, value. Magnitude is, how large or Quantity. small. Yeah, magnitude is how large or how small. What does magnitude convey? It conveys how large or how small that quantity is. Right? Clear? Yes, sir. So, for example, mass, the unit of mass is kg. For example, the standard of mass is kg, 1 kg. So, if I say 5 kg, then it is 5 times the standard Kg. unit of measurement. Then Okay. If I say half kg, it is half times the standard unit of measurement of mass. Clear? So, this kg is quantity of the mass. Okay. Now, mass is a scalar quantity. Mass doesn't have any direction or anything like that, right? Clear? Even volume, for example, if I say, you know, this liquid is say 500 liters, then it is 500 times 1 liter, which is the standard quantity that everybody agreed on. Okay. So that is also a scalar quantity. Volume is also a scalar quantity. Any other scalar quantity? Sorry. Any other scalar quantity that comes into your mind? the distance. Distance is a scalar quantity. There are many other scalar quantities. So many different scalar quantities you have. We'll come to know them slowly. Okay, one by one later. Okay. For example, work is a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity. Magnetic flux is a scalar quantity. So there are so many scalar quantities that we'll learn slowly. Okay, as we keep on learning new topics, we'll come across different scalar quantities. Now, a vector to be totally defined needs both its magnitude Direction. and direction to be mentioned. Magnitude and direction to be mentioned. Now, any vector quantity has two parameters. One is its magnitude, the other is its Direction. direction. So, the best example is, displacement. Okay. Now, displacement is the best example of a vector. Now, suppose you are standing in the middle of a desert. You're standing in the middle of a desert. You wish to go to the nearest village from there. Okay, you wish to go to the nearest village. Now, this is the north direction, this is the south direction, this is the east direction, and this is the west direction. Are you getting my point? Yes, sir. This is north, Yes, sir. this is south, this is east, and this is west. Now, this is the top view, or you can say helicopter view of the situation. You are watching from top. Now you are standing at origin. Where is origin? Where is origin? So red. Oh, Yeah, origin is the point where x-axis and y-axis meets. Okay, so this east-west axis is x-axis and north-south axis is why? y-axis. Clear? Now from here you wish to go to some village, nearest village. Now you ask someone where the village is. If he says that the village is 20 kilometers away, is that information sufficient for you to reach the village? No, sir. No. No. He has to give you the direction Direction also. also. He has to give you the direction also. Now suppose he says
the village is 20 kilometers away, then what you can do? What is the only option you have? First Sir, go to which north, then east, go then to? west. So you have to, Yes, sir. uh, Proceed in the the only option you have is you have to what? Make a circle, like a radius of 20 kilometer and roam there. You have to keep moving on a circle of radius 20 kilometers. So at some point of time, by chance, you may reach that village. You are getting my point. yes, sir. Yes, sir. Is there any other thing you can do? You cannot do anything else. So if he says that the village is 20 kilometers from this point where you are standing initially, then the only thing you can do is you go to the circumference of that circle. Which circle? With center as your initial point and radius as 20 kilometers, and you have to keep walking on that circle. You have to keep walking on that circle. Maybe at some point of time you may reach the village, right? Village can be anywhere, right? Village can be here, okay, or it can be here, or it can be here, or it can be here. You don't know. Or if you are lucky, it may be here. You may reach it quickly. Or if you are very unlucky, the village may be here. You have to travel all along this big circle and come back to that village. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, Okay. sir. But instead of just giving the magnitude, if that person gives you the direction, what do you mean by direction? He not East, only west, north. he not only tells you that village is 20 kilometers away, he also tells you that it is at the angle of, say, 53 degrees east of north. What do you mean by 53 degrees east of north? Or 37 degrees north of east? What does that mean? 37 degrees From north, northeast. 37 degree towards east. No. What do you mean by 37 degrees north of east? Sir, northeast. Yes, from north, 37 degrees towards east. No. Sir, towards the north of the east direction. First you have to face the east direction, then you have to turn by 37 degrees towards north direction. Clear? Yes, sir. So this is 37 degrees north of east. You are getting my point? What about this angle? Let me just mention it. Let me just mention the second angle. You tell me what that angle is. Now, what about this yellow colored angle? It will be 53 degrees, obviously, because 90 minus 37 is 53. But how will you mention this angle in words? 53 degrees? Tell me, 53 degrees East of north. east of north. You are East getting? of north. See, first you are facing north and you are turning 53 degrees east of north. Clear? What about this wide angle? First you turn towards east, then you turn 37 degrees north of east. 37 Clear? towards north. What about this angle? Not 37, it is theta. This angle is theta. Yeah, theta. Tell me the direction. West of south. No. This South is of south west. of west. See, from where you are measuring, that is the reference. Towards which angle direction you are moving, that is the direction. Clear? For example, what is this angle? West of south, because you are measuring from south. You are getting my point. West of south. What about this Yes, sir. angle? East of South. East of East south. of west, East of south. What about this angle?
South of east. South South of east. South of east. You are getting? What about this angle? North of West. North of North of west. North of west. And what about this angle? West of West North. of north. West of north. And sometimes if the angle is exactly 45 degrees, they say northwest. When it is 45 degrees here, they say southwest. When it is 45 degrees here, they say southeast. Southeast. Clear? And this is northeast. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, anyway, so let us continue now. Now tell me, this person tells you that the village is 20 kilometers from this point and it is in the direction of 37 degrees north of east. What did he say? It is 37 degrees north of east. Are you getting my point? Yes, sir. So basically you have to start your journey. Okay, you have to start your journey here and you have to go 37 degrees. You know, I'm erasing this 53 degrees. 37 degrees you have to go in the direction which is north of east. Okay, now there are two ways of going in this direction. One, you just turn to, you are facing north. Suppose you are facing north, you turn towards east by 53 degrees. You turn towards east by 53 degrees and then walk for 20 kilometers. That is one way. Are you getting my point? Yes, sir. Now when he gave you these two things, what did he give you? 20 kilometers and what? 37 degrees. What is 20 kilometers? R equals to 20 kilometers, right? R equals to 20 20 kilometers. kilometers and theta is equal to 37 degrees. 37 degrees 37. because we know we always measure theta from positive x-axis in Anti-clockwise direction. anti-clockwise direction, positive x-axis in anti-clockwise direction. So theta is 37 degrees. So one way of going to that point, okay, let us call that point P. Let us call that point P. Okay, so this is P. Now going to the point P from point O. What is point O? Sir, origin. Origin, but here we call it Center. initial point. We call it initial Point. point, and this point we call final point. What is final point? V. P. P is P. final point. O is initial point. Now theta is 20 degrees. Sorry, R is 20 kilometers and theta is 37 degrees. Are you getting my point? Clear? Yes, sir. Now there is one more way of going to that point. Yes. Instead of going at that angle, you can move for, you can move for some distance in the east and you can move for some distance in the north. You can move like this also. You are getting my point? Yes. Same as Yes, it sir. is for Yes, north sir. and then east. Okay, so let me take that in one color. I'll take this in another color. So let me take this in yellow. Okay, fine. So there is one more way of reaching that point. One, you can move along east, and second, you can move along what? You can move along North and north. turn towards Now, east. how much you have to move along east? You have to move x along east, and you have to move Y along with. y along north. Okay. Now tell me what is x and y. Sir, X is R cos theta. Y is Very good, very good. X is r cos 37, r cos theta. Y is r sin theta. sin theta. We already learned this, right? See, if r and theta is given, we Yes. can find x and y. If r and theta is given, we can find x and y. If x and y is given, we can find r and theta. We have learned that, right? Yes, sir. Yes, So sir. I'm writing that if r comma theta is given, then x equals to r cos theta, y equals to r
sin theta. Clear? Okay. Next, if x and y are given, you tell me now. We can find R Theta equals to tan inverse y by x. Very good. Okay, here also I should write r. Okay, then theta equals to tan inverse of Y by x. y by x, and what else? R equals to Root of x square plus y square. root of x square plus y square. Now this second thing we got from Pythagoras theorem, first thing we got from definition of tan theta. Are you getting my point? Yes, sir. So these two things are extremely important. You have to remember these two things. Okay, anyway, in that particular situation above, okay, in that particular situation, tell me what is x equals to. X equals to 20 cos 37. x equals to 20 cos 37, and y equals to 20 Sin sin 37. 37 degrees. Now everybody knows what sin 37 and cos 37 is, right? Did you forget or you remember? You remember this triangle. Always remember this triangle. Always. This right angle triangle is very important because this comes very frequently in numericals. So this is a very famous triangle, right angle triangle, whose sides are 4, 3 and 4. 3 and 5. Okay. And Yes. this angle is of course 90 degrees. This angle is 90 degrees. This angle is 37. 37 degrees. The other angle is 53. 53 degrees. So this is 37 degrees and this angle is 53 degrees. So you better remember this triangle because the values of or the trigonometric ratios of these angles are very frequently asked in numericals. So and you are supposed to remember. So this is 53 degrees. So tell me what is sin 37? Sir, 3 by 5? 3 by 5. What is cos 37? 4 by 5. 4 by 4 by 5. Clear? So if you know these two values, it's enough because tan 37 is anyway, easy. So let me just write it here. Now tell me, what is tan 37? 3 by 3 4. by 4. 3 by 4. Tan 37 is 3 by 4. 3 by 4. Okay. Now write down. What is sin 53? 4 by 5. 4 by 5. What is cos 53? 3 by 5. 3 by 5. 3 by 5. And we all know that sin theta is cos 90 minus theta, cos theta is sin 90 minus theta. And tan 53 is 4 by 3. okay. Anyway, these values you have to remember, all these values. Just like 30, 45, 60 and 90 and 0. You remember, right? These values also you have to remember. And I already gave you this. Okay, fine. Now tell me, what is x equal to here? And what is y equal to according to this? x कितना आएगा? Into 4 by 5 आएगा, 20 into 4 by 5? Yes, Right? sir. So it is I think 16, Yes, right? sir. Ji. 16 kilometers, right?
What about y? 20 into 3 by 5. 20 into 3 by 5. So 12. this is 12 kilometers, right? Yes. Now, this man can, instead of going, instead of going to turning by 37 degrees north of east or 53 degrees east of north and going for 20 kilometers, instead of that, he can move in the x direction for how much? 16 kilometers, and he can move in the y direction for 12 kilometers to reach the same point. Are you getting my uh, uh, you are getting my logic, right? Yes, sir. Yes, sir. These, see, is it better to go along that green line, or is it better to go along that pink line and yellow line? Green line. Green Green. line, yeah, when you consider going by the shortest path, but sometimes going in the exact direction becomes difficult. For example, if you have a compass which can show you north, south, and east, west, there is a magnetic compass and there is a magnetic needle. Okay, so the magnetic needle will show you in magnetic compass, it will show you north, south direction. Okay, and suppose you don't have an exact instrument that can make you turn by 53 degrees, what will you do? Sir, if we have like average 45 degrees, we can go along that line only. And slightly away, we can get. No. My question is this: suppose you don't have any instrument by turning to any angle other than north, south, and east, west. What will you do? You have to go in the east, west direction for some distance, and you have to go in north, south direction for some distance. Are you getting? Yes, sir. Suppose you don't have a Yes, sir. protractor which can make you turn by exact 53 degrees. What will you do? You will go in the east direction by 16 kilometers. Okay. Move on the x direction by 16 kilometers and move on the y direction by 12 kilometers, and you will reach the same point. Clear? Yes, sir. Now, let me repeat this. Suppose you have a vector. Suppose you have a vector. This is a vector. It is in some direction. These components are called. What do you mean by components? Parts. Parts. So these are called components of vectors. So this is the vector R. This is the x component, and this is the y component. These are called rectangular components of this vector. These are called rectangular components of this vector. Now, instead of reaching from point O to point P directly, you can go along the components and reach that point. Are you getting? Yes, sir. So I'll come back to this later after we learn few things, but just keep in mind that these are called rectangular components. Why these are called rectangular components? Because, see, you can go to x, you can go through x first and then go through y, right? Or you can go through y first, like this. See, you can go through y first and then go through x. Clear? Yes, sir. Okay, let me rewrite this. So, see, if you want to go from O to P, there are two ways to go. First, go in the x direction and then go in the y direction. Or you have second way of going. What is the second way? First go Y. Y direction, then X. First go in y direction, then go in x direction. Clear? I'll just cut it. I'll just change it. Let me just put it in yellow just for understanding better. Okay. So now can you see why they are called rectangular components? Why? Because those components will form a rectangle. Clear? Okay. Now let me just show you
some properties of vectors, important properties of vectors. First, addition of vectors. Okay, tell me what is a vector now? Which has magnitude and direction. Okay, just let me write down. We have a vector here. How to represent a vector? Vectors are represented. Like components, three components. No. Vectors are represented Arrow. using an arrow. Yes. Acha, okay. For example, you have this vector. Let us call that vector a bar. And how are vectors written? Using V और उसके ऊपर A रहेगा. letters with a bar on them. Bar Bar. on them. And in print sometimes using bold letters. Now generally nobody is using this in the days when there were no computers. They used to print books in using printing press. They used to, instead of putting a bar on the top of a letter, they used to represent arrows using a bold letter. Okay, nowadays you will not find them. You will always find vectors with a letter, okay, represented by a letter with a bar over them. So this is how vectors are represented. Clear? Are you getting my point? Okay. Now Yes, sir. the direction of arrow gives the direction of vector, gives the direction of vector. Clear? And its length reflects the magnitude. Magnitude. Are you getting my point? Now suppose you have a vector like this. You have two vectors. Suppose this is one vector, this is another vector. Now can you tell me, now these are two vectors, let us call it a bar and let us call it b bar. So I'll change the color just for understanding. Let us take it green. Okay, so this is b bar. Now tell me, what can you tell about these two vectors? So they have same direction, but in magnitude they are different. Yeah, so a bar and b bar have same direction, but the magnitude of b is greater than a. Do you agree? Do you agree? Yes, sir. Anybody sir. has any doubt in this? This is common sense, right? You can just see and tell this. Okay. So this is a bar. Okay. Let me call it C bar. Okay. Now, what can you tell about this?
What can you tell about these two? Different directions, but Very good. magnitude same. Very good. A bar and B bar have equal magnitudes. Equal magnitudes. Why? Because you have seen me drawing, right? I've drawn equally. But different direction. Are you getting my point? Yes, sir. Now, what about these? You tell me. So, this is one vector. So, let me just write down it like this. Copy, paste. I think 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Duplicate. 1, 2, 3, 4, 5. So what can you tell about these three vectors? Now, if you see carefully, the length of the second vector or the magnitude of second vector is double the magnitude of first vector, and magnitude of third vector is 3 times the magnitude of first vector. Can you see that? Yes, sir. So Yes, sir. what I can do is I can write this as a bar. Okay, I can write this as a bar. Uh, okay, let me just write it here. I can write it as a bar, and the second vector I will call it p bar, and the third vector I'll call it q bar. Okay, now what relationship can I write between? Okay, first I'll write down the statement. A bar, p bar, and q bar have same direction but different magnitude. Clear? Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. And what else? P bar equals to 2a bar, 2 times. and q bar equals to 3a bar. Clear? Now I'll write down one statement here. When you multiply a scalar to a vector, what do you mean by multiply a scalar to a vector? Its direction Remains the direction of the vector. Okay, let me just write out specifically correctly. When you multiply a positive scalar to a vector, its direction remains same and its magnitude scales. It's called scaling. It's called scaling of a vector. What is it called? Scaling of a vector. What do you mean by scaling? देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? मैग्नेट डायरेक्शन तो सेम था पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डबल हो गया. क्लियर? 3 मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया? सर 3 टाइम्स हो गया मैग्नीट्यूड. 3 टाइम्स हो गया मैग्नीट्यूड. करेक्ट? जी. एंड डायरेक्शन तो सेम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड व्हाट यू आर Yes, sir. मल्टीप्लाइंग? Yes, sir. व्हाट यू आर मल्टीप्लाइंग? यू आर मल्टीप्लाइंग ए स्केलर. ठीक है? ओके. Now
What about this? What about this? What about this? हाँ अभी बोलो. So we are multiplying negative times the number. तो देखो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि s इक्वल्स टू माइनस ए बार, t इक्वल्स टू माइनस 2a बार, -2. एंड u इक्वल्स टू माइनस 3a बार. ओके, सो अभी बोलिए व्हेन यू मल्टीप्लाई है, बोलो. A negative number to a vector. नेगेटिव नंबर या नेगेटिव स्केलर, ठीक है, नेगेटिव स्केलर टू ए वेक्टर, ठीक है. एक्चुअली नेगेटिव नंबर बोलो, नेगेटिव नंबर बोलो. यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे नेगेटिव नंबर, ओके, नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर टू ए वेक्टर क्या क्या हो गया? देन द डायरेक्शन रिवर्सेस, डायरेक्शन रिवर्सेस एंड द वेक्टर स्केल्स, वेक्टर स्केल्स. स्केल्स मतलब क्या? 2 मल्टीप्लाई किया तो डबल हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 3 मल्टीप्लाई किया तो ट्रिपल हो जाएगा. आर यू गेटिंग? ओके. Yes, sir. Okay, next let us go. So what did we learn now? We can multiply a number to a vector. You can either multiply a positive number or you can multiply a negative number. When you multiply a positive number क्या होगा? डायरेक्शन सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड जो है ना, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट बड़ा या छोटा हो जाएगा. क्लियर? वेक्टर को छोटा करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? एग्जाम्पल दीजिए. Subtraction से हाँ, क्या फ्रैक्शन? एग्जाम्पल दीजिए. 1/2. 1/2. 1/2 करने से आधा हो जाएगा, या 1/3, या 2/3 भी कर सकते हो, या 3/4 भी कर सकते हो, राइट? ओके, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 1/2 क्या होगा? यू नो, डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ. माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? माइनस Direction. डायरेक्शन चेंज होगा. डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ. क्लियर? This is So you have to understand this. So what we are doing here, you are multiplying a number with a vector. ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्केलिंग. क्या बोलते हैं? स्केलिंग. ओके, क्लियर? और इसको बोलते हैं स्केलर Yes. मल्टीप्लिकेशन भी. This is also called scalar multiplication. This is also called scalar multiplication of a vector. Clear? Okay. Now let us go to addition of vectors. Let us go to addition of vectors. Now what do you mean by addition of vectors? Suppose you have two vectors. First is a bar. ये आपका a bar है और आपका दूसरा वेक्टर है b बार. तो दिस इज योर वेक्टर b बार. ये आपका वेक्टर b बार है, ठीक है. So what do you mean by addition of vector? For example, here we are adding these two vectors. Let us call it r bar. Let us call the sum of these two vectors as r bar.
तो आर बार भी एक वेक्टर है, डू यू एग्री? क्योंकि उस पे बार लिखा हुआ है. सो आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार. सो ऐसा दिया गया एडिशन, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार. व्हाट डज दिस मीन, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार? इसका मीनिंग क्या है? तो बेसिकली आप पहले ए पे ट्रैवल किया आपने, ओके, तो यू स्टार्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ ए, दिस इज द टेल ऑफ ए, you ended your journey at the head of A. Are you getting my point? ठीक है. Now after Yes, sir. completing the journey on A, you start your journey on B. तो B से स्टार्ट करेंगे, B के टेल पे स्टार्ट करेंगे और B के हेड पे एंड करेंगे. So in vector you always start from the tail and you end at the head. So this is called tail of the vector and this is called head of the vector. You are getting my point? एंड इट इज कॉमन सेंस, राइट? दिखाई दे रहा है कौन सा है Yes. टेल है और कौन सा हेड है. ठीक है, तो ए का टेल कौन सा है? ए का टेल है ये, ए का हेड है ये. बी का टेल है ये और बी का हेड है ये. नाउ यू हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, राइट? ए बार प्लस बी बार, ए बार और बी बार को ऐड करना है आपको, ए बार प्लस बी बार करना है. तो हाउ डू यू ऐड द वेक्टर्स? यू जॉइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो एडिशन के लिए क्या करोगे? ए बार लोगे. सो मैं कॉपी करके इधर ले रहा हूं, ए बार. द थिंग इज यू कैन स्लाइड द वेक्टर्स एज लॉन्ग एज यू डोंट चेंज द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. समझ में आई बात? अभी देखो, व्हाट एम आई डूइंग हियर? बोलो, बी को क्या कर रहा हूं मैं? व्हाट एम आई डूइंग टू बी? आई एम स्लाइडिंग द वेक्टर. I am sliding the vector here. Line See, दे रहा. clear? Now you can slide the vector anywhere. Now if you want to add B to A, what will you do? You will put the tail of B to the head of A. Clear? समझ में आई बात? और आपका एडिशन क्या हो जाएगा? फ्री टेल टू फ्री हेड. आपका एडिशन क्या हो जाएगा? ये फ्री टेल है और ये फ्री हेड है. ये दोनों फ्री टेल और फ्री हेड नहीं है, बिकॉज हेड और टेल दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? Yes, sir. Yes. So this is the thing. So this is vector A bar, this is vector B bar. A को भी स्लाइड करके नीचे ला लिया मैंने, B को भी स्लाइड करके नीचे ला लिया. ऐड करने के लिए क्या किया? B का टेल A के हेड से लगाया. तो बेसिकली आपकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई? यहाँ पे स्टार्ट हुई. A पे जाने के बाद इधर एंड हुई, फिर B पे स्टार्ट करने के बाद इधर एंड हुई. तो ओवरऑल आपकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई और कहाँ एंड हुई? यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई. ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर भी वही आएगा. सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर. ये क्लियर? दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, तो sir. ये है आपका आर बार, ये है आपका आर बार. तो बोलिए एक बार कैसे ऐड करें वेक्टर्स? You put the tail of the second vector on the head of the first vector, and after putting that, the net resultant vector or the sum of these two vectors is from the free tail to free head. Clear? समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, can you tell me what will be B bar plus A bar? तो इंस्टेड ऑफ A bar plus B bar, अगर मैंने पूछा आपको B bar plus A bar क्या है, क्या करेंगे? पहले B bar लेंगे. क्लियर? Yes, sir. So I am copying this, I am pasting it here. किधर भी रख लो आप, as long as you don't change the direction and magnitude. Clear? ओके, B बार ले लिया. अच्छा, B बार पे A बार ऐड करना है तो A बार ले लिया. क्या करेंगे अभी? A का टेल B के हेड पे लगाएंगे. ठीक है, जी सर. क्या किया मैंने? बोलो, what did I do?
I put the Join the tail of tail of A at the head of B. Now B. tell me what is the resultant vector from free tail to free head. From the tail to tail free of head. B to the head Free of tail A. to free head. तो ये है आपका resultant vector. Now, can you see any difference between the resultant vector we got previously and the resultant vector we got now? Is it different or same? So heads and tails are It's interchanged. upside down. No. It is not upside down. Just look at R bar above and below. Can you see that both are same? R bar देखो खाली रिजल्ट Yes, देखो sir. Yes, sir. समझ में Yes, आई sir. बात Okay, so what can I conclude? A bar plus B bar equals to B bar plus A bar. समझ गए? Yes, sir. तो पहले B पे जाओ बाद में A पे जाओ या पहले A पे जाओ बाद में B पे जाओ आपका रिजल्टेंट वेक्टर वही आएगा. डू यू अग्री? Yes, sir. ठीक है. नाउ आई एम रीराइटिंग दिस कॉपी, आई एम पेस्टिंग इट. तो आर बार दो तरीके से आएगा आपको. कैसे आएगा? ए बार प्लस बी बार से और बी बार प्लस ए बार से. समझ में आई बात? सो दिस इज बी बार, दिस इज ऑल्सो बी बार. वाई? Now, if you look at this diagram, what is A bar plus B bar? Going here and then going here. What are you? Where are you ending up by doing that? Overall, you are starting here and you are ending here. You are ending up at R bar. Clear? What is B bar plus A bar? First go here and then first travel on this path, then travel on this path. Again, you are ending up on the same resultant path. Clear? Yes, sir. So A bar plus B bar equals to B bar plus A bar. Are you understanding my point? जी sir. So what is the Yes, sir. shape of this diagram? Parallelogram. पैरेललोग्राम. सो एक लॉ है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ. ओके, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलेगा? व्हाट डज पैरेललोग्राम लॉ से? व्हाट डज पैरेललोग्राम लॉ से? इफ two vectors are represented, बोलो, two vectors are represented as the adjacent sides of a parallelogram of a then their sum is along one of its or is sum, their sum can be given as one of the diagonals taken from common tails to or taken from common tails to common heads. समझ में आई बात?
अगर मैंने दो वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स की तरह ले लिया, तो यहाँ पे देखो ए एंड बी पैरेललोग्राम के क्या है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है, क्लियर. नाउ आई कैन स्लाइड द वेक्टर, आई कैन स्लाइड ए and I can put it here. Do you agree? Are you listening? Yes, sir. You can Yes, slide, sir. you can slide B and you can put it here. What did you get? You got a parallelogram. Okay. इस पैरेललोग्राम में एक पॉइंट है जहां पे कॉमन टेल्स है, एक पॉइंट है जहां पे कॉमन हेड्स है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अलोंग द डायगोनल होगा. और रिजल्टेंट क्या होगा? डायगोनल ही होगा रिजल्टेंट. और कहाँ दो डायगोनल्स है ना, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, ठीक है, समझ में आई बात? तो कौन सा डायगोनल चूज करोगे? द डायगोनल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉमन टेल्स एंड एंड्स एट कॉमन हेड्स. ओके, क्लियर, समझ में आई बात? ओके, एनी कंफ्यूजन इन दिस? सर हम दूसरा वाला डायगोनल नहीं ले सकते? दूसरा डायगोनल नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो ए बार प्लस बी बार नहीं आएगा. बाद में पता चलेगा कि वो ए बार माइनस बी बार आएगा. देखो यहां स्टार्ट हुआ ना वेक्टर. देखो वेक्टर्स, हाउ डू यू ऐड द वेक्टर्स? टेल मी. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर. You put the tail of second vector to the head of first vector and your resultant vector is from the free tail to free head. समझ में आई बात? Yes, sir. So it is, देखो, that is, see, this is nothing new you are learning. It is common sense. आप इधर से इधर गए, फिर इधर से चल के इधर गए, तो ओवरऑल किधर से चल के किधर गए? इधर से चल के इधर गए, राइट? तो अगर ये ए बार है और ये बी बार है, तो ये आपका ओवरऑल ए बार प्लस बी बार है. क्लियर? आप इधर से चल के इधर गए, फिर इधर से चल के इधर गए, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या है? ये है. क्लियर? या बहुत सारे वेक्टर्स ऐड कर रहे हो. पहले आपने इधर इधर डिस्प्लेसमेंट किया, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट किया, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट किया, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट किया, फिर लास्ट में इधर डिस्प्लेसमेंट किया. ये वेक्टर्स को कैसे ऐड किया? देखो, always put the tail of next vector to the head of previous vector, right? Yes, sir. और रिजल्ट कैसे आया? ओवरऑल किधर से किधर गए आप? इधर से इधर गए, राइट? ये आया आपका रिजल्टेंट. दैट इज हाउ यू ऐड द वेक्टर्स. क्लियर? हाँ, Yes, sir. समझ में आया ना? ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस. Yes, sir. थिंक अबाउट दिस डायग्राम. Sir, Yeah, tell me. sir, you said A bar plus B bar is equals to B bar plus A bar, right, sir? Yes, yes. What if the values are in negative? No, values will never be in negative. Magnitude will never be in negative. Alright, okay, sir. Okay. Yes, sir. Magnitudes will never be negative, but what you are trying to say is, what about a bar minus b bar? A bar minus b bar will be equal to minus b bar plus a bar. Clear? Yes, sir. So basically this law is commutative, so you can add in any order. You need not add first vector first and second vector second. You can put the second vector first and take the first vector second. Even though they are in the different order, the result will be same. Clear? Yes, sir. Now, second thing, what did I tell you? You can slide the vectors. You can put A here and you can put A on the bottom, or you can put A on the top. You can put B on the left, or you can put B on the right. Are you getting? So if you go through this path, this is basically A bar plus B bar. This path is A bar plus B bar. Clear? This path is B bar plus A bar. Clear? But सर आपका माइक म्यूट हो गया.
You're muted. So this is a bar plus b bar. Your result is this. This is b bar plus a bar. Your result is again the same. Clear? So either way, you will end up with same result. A bar plus b bar is equal to b bar plus a bar. But if you draw this, now how am I drawing this? I am sliding the vector. I am putting b here or I am putting a here, because vectors can be slided. Okay, some vectors cannot be slided. I'll discuss that later, like position vector. But all vectors like displacement, velocity, force, etc. can be slided. What do you mean by slide? You can change the no, you can change the place where the vector is there, as long as you don't change its Direction and magnitude. direction and magnitude. That is called sliding a vector. Clear? Now, this is called parallelogram law. Are you clear? Okay. Next. Sir, Uh, sir, if we put A and B as a line, I mean B in front of A, then R would not be equal to A plus B. what? Sir, if we are drawing a line, which is one part of it is A dash, A bar, and another part is B bar, but their length would not be equal to R bar, as R bar is the diagonal here. I didn't understand. If you put A as Sir, just let's take this parallelogram. A is a side, A hmm, bar, and hmm. B is also a side, a vertical kind of side. If we put this vertical line as a horizontal line, B bar, A and B would make a line, a straight line. Then R bar would not be equal to A plus B bar. This is A bar and this is B bar, you mean? Yes, sir. Still it will be. But what will be the resultant? Resultant will be this. Clear? If this is A bar and this is B bar, then R bar will be this. Why? Because if you start from free tail to free head, this is what you will end up with. Clear? Okay, sir. It doesn't matter what the direction of A and B is. Always put the head of the second vector to the tail of the second vector to the head of the first vector, and always the resultant is from the free tail to free head. Clear? So this is the resultant here. Okay? It doesn't matter what the angle is. For example, if A is like this and B is like this, if B is like this and A is like this, what will be the resultant? This will be the resultant. Are you getting my point? Okay? Yes, sir. Now let me ask you some questions. Sometimes addition of vectors is simple, sometimes it is difficult. Before going into that, let me give you some important things you have to keep in mind. Now, when you want to measure the angle between two vectors, or the angle between two vectors. Acha, now first tell me how to add two vectors. Geometrically, how to add two vectors? Put the Tail of the second vector tail at of the second head of the vector on first the head of vector. the first vector, and the resultant vector is from free tail to free head. Clear? Yes, sir. I've told that repeatedly, you have to remember. Now, but for the angle between two vectors, always put the tails of the vectors together. You are getting my point? Suppose this is first vector A bar. This is one vector A bar. And there is some another vector, say it is B bar. It is B bar. So this is another vector B bar. What did I do? Did I put head to the tail or did I put the tails together?
Tails So together. I tails. put the tails together. Now when you put the tails together, there are always two angles between the vectors. One is big angle and one is small angle. One is big angle and one is small angle. Can you see that? So basically this is small angle and this is a big angle. One angle will be greater than 180 and the other angle will be less than 180. You should always go for the smaller angle. Clear? Put the tails of two vectors together at a common point. At a common point, we have two angles between the vectors. First one is smaller angle, which is less than 180 degrees. Second is Greater angle. larger angle, I can say, or greater angle, I can say, anything. Larger angle, which will be more than 180 degrees. Always choose Small angle. the Smaller. smaller angle. Choose the smaller angle, which is, और smaller angle मतलब जो lesser than 180 degrees है, that's the angle between the vectors. Clear? Angle between two vectors. Are you clear? आपको कुछ डाउट है इसमें? Any doubt in? हाँ, बोलिए. सर जो बाहर वाला एंगल है उसे हम बिटवीन द वेक्टर्स कैसे कह सकते हैं? वो कौन तो सा? बाहर है ना कौन सा? सर, जो ग्रेटर एंगल होगा हाँ, वो भी तो बिटवीन ही है. दिस इज ऑल्सो इन वन वे बिटवीन ना. ये भी एक तरीके से बिटवीन ही आएगा. Sir, हम्म angle between two vectors can never be 180. या देख, इट कैन बी. वही बताने जा रहा हूँ मैं. वेरी गुड. आई वाज जस्ट होपिंग फॉर दैट डाउट ओनली. व्हाट इफ टू एंगल्स आर इक्वल? What if two angles are equal? We can take any two. You can take either. It doesn't matter. Yes. Okay. Suppose ये एक वेक्टर है, एक और वेक्टर ये है आपका. ठीक है. So this is A bar and this is B bar. जो भी है. This is B bar. This is A bar. This is B bar and this is A bar. तो common tails तो लगा दिए. ठीक है. We have put the common tails together at this point. Can you see that? Now, which angle to choose here? ये वाला या ये वाला? कौन सा? It doesn't matter here. समझ में आया आपको? Yes, sir. ऊपर वाला चूज करो या नीचे वाला, दोनों भी क्या होंगे? 180 होंगे. So ये होगा 180 degrees. So in case of equal angles, either is 180 degrees. Clear? समझ में आई बात? तो someone asked one doubt कि ये वाला between कैसे होगा? ये वाला between कैसे होगा, right? तो ओके, कॉमन सेंस से देखेंगे तो बिटवीन नहीं होगा ये, बट अगर टेक्निकली मैथमेटिकली सोचे तो दिस इज ऑल्सो एन एंगल बिटवीन बी एंड ए ओनली ना. समझ में आई बात? सर आ गया था समझ में. हाँ, तो तो कंफ्यूजन होता है कि ये एंगल ले या ये एंगल ले. तो द कन्वेंशन इज दैट यू ऑलवेज टेक द स्मॉलर एंगल. क्लियर? अगर लार्जर भी लेंगे ना तो भी आपको रिजल्ट वही आएगा मैथमेटिकली, बट इट इज बेटर टू गो विथ स्मॉलर एंगल. क्लियर? Okay.
नाउ नेक्स्ट, सर हाँ बोलो। सर हम 180 डिग्री को 0 नहीं मान सकते नहीं मान क्योंकि सकते, वो भी तो स्ट्रेट लाइन है। नहीं 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 नहीं, जीरो ऐसे होगा, देखो जीरो ऐसे होगा, ए बार इधर होगा और बी बार भी और कोइंसिडेंट बी बार भी उधर ही होगा। अगर एक्चुअली साथ नहीं उतार सकता क्योंकि साथ उतारूंगा तो ए बार कट जाएगा। तो अभी हियर इन दिस केस बोलो क्या है एंगल? सर 0 एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज 0 डिग्रीज। क्लियर? समझ में आई बात? 0 और 180 में डिफरेंस समझ में आया? जी सर। तो ये है 0 और ये है 180, ठीक है? ओके, नाउ let me ask you, okay, one more thing, let me, magnitude of a vector, magnitude, so just me write down, magnitude of a vector is its length, right? Geometrically, okay. Now magnitude is represented by, अब कोई भी वेक्टर है आपका, उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय mod of a vector. What do you mean by mod? सर एब्सोल्यूट वैल्यू। नहीं, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू तो नंबर्स में होती है। मॉड मतलब दो पैरेलल बार्स लगाते हैं ऐसे, ठीक है? एग्जाम्पल, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई वेक्टर ए बार इज गिवन बाय ऐसे, देखो ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड। ए बार लिख दिया, इधर एक बार लगा दिया, इधर एक बार लगा दिया, इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. So this is how magnitude is represented. This is called modulus. इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है? एंड समटाइम्स और actually commonly magnitude is also represented by just the letter, okay? ऐसे the corresponding letter without a bar. समझ में आया? एग्जाम्पल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज, बोलो। मॉड ऑफ ए नहीं नहीं, वो तो हो गया, ये सेकंड वाला है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज बी B. बी, पी बार इज पी, आर बार इज आर। समझ में आया? क्लियर? बी क्या है? बी बार का मैग्नीट्यूड है। पी क्या है? पी क्या है? पी बार का मैग्नीट्यूड है। आर क्या है? आर बार का मैग्नीट्यूड है। समझ में आई बात? क्लियर? Yes. ओके, फाइन फाइन। नाउ आई एम प्रोसीडिंग। अभी करते हैं, ठीक है? अभी विल स्टार्ट। कॉपी। According to this diagram, बोलो,
A bar plus B bar equals to B bar. बोलो. Plus A bar equals to R. R. R bar. R bar. Clear? Yes, sir. Okay. Okay. So we'll study cases. Some observations in addition of vectors. You can answer these questions. Okay, easy questions है. देखो, आपके पास A बार है और आपके पास B बार है. So this is A bar and this is B bar. Now I am writing a statement here. I am saying that R bar equals to A bar plus B bar. समझ में आई बात? Clear? Now tell me what is R equals to. ये तो वेक्टर फॉर्म है. ये क्या है? A plus B. वेरी गुड, वेरी गुड. ये क्या है? ये वेक्टर फॉर्म है, राइट? Yes. This is और यहाँ पे we are magnitude. talking about Magnitude. मैग्नीट्यूड्स. Magnitude. तो R बार इक्वल टू क्या होगा बोलो? A प्लस बी. क्वाइट सिंपल दिखाई दे रहा है वहां पे. समझ में आई बात? क्योंकि R बार ये है. कैन यू सी वेयर R बार इज? दिस इज R बार. Can everybody see that magnitude of R is equal to A plus B? A plus B. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. This is R bar. Now what about this second case? So this is case 1. Let us go to case 2. अभी बोलो. ये A बार है और ये B बार है. ओके. और ऑब्वियसली मैंने क्या किया? टेल ऑफ बी मैंने हेड ऑफ ए को लगा दिया, तो ये आएगा मेरा रिजल्टेंट. No, I'm intentionally drawing them apart because if I draw on the same line, you cannot see them, right? So this is your R bar. तो बोलो वेक्टर रिलेशन क्या है ये तीनों में? A bar minus B bar. No, 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 no. Please, A bar plus B bar A bar plus B bar. equals to R bar. देखो ये दूसरा केस है, लास्ट केस नहीं है, ये नया केस है. ठीक है, यहाँ पे B bar उल्टा है पहले से ही. समझ में आई बात? ये Yes, क्या है? sir. वेक्टर फॉर्म है. स्केलर फॉर्म में क्या बोलोगे? A plus B equal to R. बोलो. देखो A इतना है, A कहाँ से लेके कहाँ तक है? इतना बड़ा है A. Yes, sir. B यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो R क्या होगा? Sir, A minus B. A माइनस B होगा. A माइनस B. तो बोलो R बार इज इक्वल टू A minus B. A माइनस B. क्लियर?
Any problem in understanding this? Sir, why we don't write there a bar minus b bar equals to r bar? क्योंकि b बार खुद उल्टा है ना, अगर इधर लिखूंगा a बार माइनस b बार तो मैं उल्टा कर दूंगा b को, ठीक है? क्लियर? जी सर। No, sir. b itself is in the backward direction, माइनस b फिर सीधा हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है? जी सर, जी सर। देखो यहाँ पे b फॉरवर्ड था तो माइनस b ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे b खुद ऐसे है तो अगर आप माइनस b लिखोगे तो माइनस b ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये होगा माइनस b इधर, इस केस में, केस 2 में, ठीक है? इस केस में माइनस b कैसे होगा? ऐसे होगा केस 1 में, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है? क्लियर? Any doubt in that? Anybody? No, sir. Okay, this is a bar. This is b bar. ये क्या है? b bar है, ठीक है? So this is a bar and this is b bar. तो एक b की टेल a के हेड को लगी हुई है. Do you get that? जी सर। थोड़ा बड़ा उतार लेता हूँ. तो ये a बार है, तो r बार होगा ये. तो according to this diagram, what is the relationship, vector relationship between a, b and r? बोलो. r bar equals to A bar plus a B. bar plus b bar। a bar plus b bar. सिंपल. यस सर। ये हो गया वेक्टर एडिशन, ठीक है? ये हो गया वेक्टर. अब मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या करेंगे? सर r इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये 90 डिग्रीज है. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो r क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ. A square a plus B स्क्वायर square. प्लस b स्क्वायर। Now how did you get that? Quite simple. It is evident. a square plus b square. पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? समझ में आया? ठीक है? Yes, sir. ओके. अच्छा, मेरे को ये बोलो, यहाँ पे थीटा क्या था? What was theta here? Sir, case 1, केस 1 में थीटा कितना था? 180. थीटा कितना था? ए और बी के बीच में थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन ए एंड बी. थीटा इक्वल्स टू 0। 0. 0. सर 181। Sir, it should be 180 ना. कैसा 180? नो सर, दे आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है. टेल्स लगा के देखो एंगल, हमेशा टेल्स लगा के देखो, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. ए एंड बी आर Same direction. नहीं, स्टेटमेंट बोलो. पैरेलल, ठीक है? यस सर। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है इस केस में? 180। 180. 180 डिग्रीज. और स्टेटमेंट बोलो, ए बी आर क्या बोलेंगे यहाँ पे? Not parallel. सर ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन उनको बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है? यस सर। याद रखना, अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है एग्जैक्टली तो उनको बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है? Okay, sir. ओके. यहाँ पे बोलो थीटा क्या है? ठीक है, ये ये तो वैल्यू पे डिपेंड. नहीं नहीं, यहाँ पे बोलो थीटा है 90. 90 डिग्रीज. क्योंकि देखो टेल्स जमा करके देख लो दोनों के, तो दोनों के बीच में एंगल आएगा 90, राइट? बी और ए के बीच में है क्या नहीं? समझ में आई बात? जी सर। देखो अगर Yes, sir. बी को स्लाइड करके इधर रख दिया मैंने, ठीक है? तो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा ना?
ये Yes, एंगल sir. कितना है? 90 है। ओके हाँ, और क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर Perpendicular. परपेंडिकुलर। कभी कभी एक और वर्ड यूज होगा परपेंडिकुलर के जगह पे, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं? Orthogonal. इसे ऑर्थोगोनल भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बाद में पता चलेगा। ऑर्थोगोनल जनरली 3D में यूज करते हैं, परपेंडिकुलर जनरली 2D में यूज करते हैं। तो ऑर्थोगोनल। ओके अनदर वर्ड फॉर perpendicular is orthogonal. Okay, now we'll do the most important thing. Okay, and then we'll stop. We'll continue tomorrow. Okay, now what if two vectors are neither parallel nor anti-parallel nor, so let us do general case. क्या कर रहे हैं अभी? General case. What do you mean by general case? They are not parallel, anti-parallel, or they are not perpendicular. थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। This So is this is vector a bar and this is vector b bar. तो ए बार और बी बार के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। उन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। थीटा मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थीटा कैन बी एनीथिंग। सो थीटा कैसे मेजर करते हैं? दोनों के टेल्स को एक जगह रख के थीटा मेजर करते हैं। तो दिस इज योर थीटा। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स गिवन। बी बार का मैग्नीट्यूड, ए बार का मैग्नीट्यूड है ए बार का मैग्नीट्यूड है ए और बी बार का मैग्नीट्यूड है बी। ठीक है, समझ में आई बात? yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दे दिया। इसका मैग्नीट्यूड है ए और इसका मैग्नीट्यूड है बी। क्लियर? नो, हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ए बी। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। कैसे करेंगे थोड़ा देखो, ठीक है। नाउ यू टेक दिस, कॉपी पेस्ट। इंफॉर्मेशन क्या क्या है आपको? ए है, बी है और थीटा है, ठीक है। अभी कैसे करेंगे एडिशन बोलो? हेड को Tail के साथ मिलाएंगे. टेल लगा दो। ओके, थोड़ा छोटा कर लूंगा। ओके, हेड को टेल लगा दिया, वेरी गुड। थोड़ा छोटा कर लो, हाँ ओके, तो थोड़ा छोटा कर लिया। हाँ, हेड को टेल लगा दिया। अब कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? Sir, which angle? I'll show you Sir, same as theta. this angle. Sir, we can say 180 minus theta. No, this angle. Theta. Theta, sir. Equal to theta. Equal to theta. It will be theta only. Are you getting my point? Yes, sir. ये भी थीटा होगा। अच्छा, वेरी गुड। अभी मेरे को ये बोलो, मैं ए बार बी बार नहीं लिखता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ ए, क्योंकि इसका लेंथ ए है, और इधर लिखता हूँ बी, तो इसका लेंथ बी है। इसका भी लेंथ क्या होगा? बी होगा। डू यू एग्री? Yes, sir. अच्छा, रिजल्टेंट का लेंथ क्या आएगा? ये आएगा। रिजल्टेंट का लेंथ क्या आएगा? ये ग्रीन में लिखते हैं, ये रिजल्टेंट है आपका। तो ये रिजल्टेंट का लेंथ है। तो समहाउ मुझे रिजल्टेंट की लेंथ मालूम करना है मुझे, ठीक है। नाउ आई कैन नॉट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज दिस ए बी इज नॉट इन द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा नहीं। अब आई विल यूज अ स्मॉल ट्रिक। आई विल टेक द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ बी। बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा ये, ठीक है, Yes, sir. और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा ऊपर वाला। Vertical. तो उसको क्या लूं मैं? ऑरेंज
ग्रीन, ये कोई कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। एक और कंपोनेंट आएगा ये, ठीक है। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि they will make a rectangle if you just slide them again, ठीक है। अच्छा बोलो ये कितना होगा, ये डार्क ब्लू कितना होगा? बी, Angle, sir. बी उसका लेंथ कितना होगा कंपोनेंट का? बी, cos ये थीटा है, cos theta. जो थीटा को लगा हुआ है वो होगा बी cos थीटा, और वो वाला B sin theta. बी sin थीटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी सर। समझ में आया बी के कंपोनेंट्स कैसे निकले? कोई भी आर होगा तो Yes, आर sir. cos थीटा और आर sin थीटा होगा ना। देखो इधर स्टार्टिंग में इसका देखो, x इक्वल टू क्या हुआ? आर cos थीटा हुआ, ठीक है। यस सर। यहाँ पे अगर ये आर है और ये थीटा है तो x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इक्वल टू आर sin थीटा। थीटा को जो टच कर रहा है वो आर cos थीटा, थीटा को जो टच नहीं कर रहा वो आर sin थीटा। क्लियर? समझ में आई बात? यस सर। तो ये b cos थीटा और ये b sin थीटा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दिया आपको कहीं? ये है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये साइड कितना है? a प्लस बी cos थीटा है कि नहीं? और ये साइड कितना है? b sin थीटा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो r कितना होगा? Yes, sir. Therefore r square equals to a plus b cos theta whole square plus b sin theta whole square. Do you agree? Yes, sir. देखो अभी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया जिसके परपेंडिकुलर साइड्स ये दोनों है। ये साइड कितना है? ये साइड a प्लस b cos थीटा। अग्रीड? यस और सर। ये साइड कितना है? b sin थीटा। तो यहाँ पे b sin थीटा लिख दिया। तो व्हाट इज r स्क्वायर इक्वल टू? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ओके तो r स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b b स्क्वायर स्क्वायर कॉमन ले लो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा Science प्लस perfect. 2ab cos थीटा। आ गया? यस सर। नाउ व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? 1 इज इक्वल 1। टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अग्रीड? यस सर। At last what is r equals to? Yes. रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab Root of Root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Agreed? यस सर। तो ये जनरल ये है आपका क्या है? एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। r क्या है? रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट है। r क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। a क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a। b क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। ठीक है, a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, r इज मैग्नीट्यूड ऑफ r बार और रिजल्टेंट। ठीक है, क्लियर? Yes. और थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो देखो क्वेश्चन ये है, इफ r बार इक्वल्स टू, बोलो, a बार प्लस b बार and angle between
बोलो. Angle between A bar and B bar is theta. A bar and B bar is theta. Magnitude of लिख देते हैं हम लोग, magnitudes of A bar, comma B bar, comma R bar are A, B, and R. A, B, R respectively. Then यही, then this thing. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. और एक और तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको. एक और तरीका भी है लिखने का, जिसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हो इसको. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. समझ में आई बात? Yes, sir. Okay, this is also correct. Okay, now let us check and let us finish the lecture. If theta is 0, then r equals to Root of A square plus B square plus 2AB cos 0. cos 0 क्या होगा? 1. 1. तो a square plus b square plus 2ab हो जाएगा. But what is a square plus b square plus 2ab? A plus B whole square. a plus b whole square. तो लास्ट में क्या आया? a plus b आ गया. क्लियर? समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me just write down. तो क्या हो जाएगा ये? cos क्या आया? 0. cos 0 क्या है? 1. 1 है. तो क्या आया? A plus B whole square. तो r इक्वल्स टू क्या आया? A plus B whole square, and then it will be A plus. ये हो गया a plus b whole square, which is equal to a plus b. Clear? So as expected आया ना? Yes, sir. अच्छा, 180 होगा तो क्या होगा? Sir, A minus B? Let us just check it. तो यहाँ हो गया 180 डिग्रीज, राइट? तो cos 180 कितना होगा? -1. -1. -1 आएगा. तो यहाँ पे -2a भी आएगा. क्लियर? Yes, sir. A minus B. आएगा, a minus b minus B आएगा. whole square. Minus B whole square. तो लास्ट में क्या आएगा? A minus B. Minus A B. minus B. a minus b. तो एज एक्सपेक्टेड वही आया था पहले भी, अभी भी वही आया. ठीक Yes, है. sir. ओके, ये हो गया. ओके, नाउ इफ थीटा इज 90 डिग्रीज क्या आएगा? A square plus B square. G. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा. क्यों? सर क्योंकि Theta is cos 90 डिग्री. 0. cos 90 क्या होगा? 0 cos 0 होगा. तो 0 होगा तो ये सब चला जाएगा और यही आएगा आपको. ठीक है? तो क्या आया? A plus B. यही आया. यही आंसर है. दिस इज आंसर. r equals to under root of a square plus b square if theta is 90. So that was the result that we got geometrically before, right? देखो यहाँ पे under root of a square plus b square आया था, यहाँ पे a minus b आया था और यहाँ पे a plus b आया था. ठीक है? क्लियर? Yes, sir.
So tomorrow I will continue with the direction of R bar. How to find the direction of R bar. R bar का direction कैसे find करें वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? So this is part of Yes, sir. parallelogram law. This is part of parallelogram law. We'll continue tomorrow. Clear? Yes, Okay. sir. So I'm Yes, ending sir. here. Just go through well. I'm uploading this. Okay. Okay. So we'll continue tomorrow. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you.